नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही चैनल पे एसएससी क्रिएटर, जहां पे एसएससी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे। आज हम लोग एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आ चुके हैं। जो एसएससी स्टूडेंट का प्रिपरेशन यहां ऑफलाइन कराए जा रहे हैं, उस स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को मैं अपने सामने, जिस प्रकार प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, एक बच्चे के साथ मैंने बातचीत किया जो किड्स स्पोकन से था, और यह स्टूडेंट जो आ रहे हैं यह आपके एसएससी जो मेन रूप से तैयारी कर रहे हैं उस क्लास से आ रहे हैं। तो आज मैं बातचीत करूंगा इंग्लिश को लेकर के, स्पेशल जो एसएससी में पूछे जाते हैं या अन्य भी एग्जामिनेशन में कहाँ कहाँ क्या इंपॉर्टेंस है। सो आप सभी के तालियों के स्वागत के साथ तो यह मेरे स्टूडेंट है, किस प्रकार से आ रहा है उसमें एकदम ठीक है, देख लीजिए। ओके, सो इब्राहिम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने इंट्रोडक्शन को व्यूअर्स के सामने रखें, मींस सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है आप दें, और फिर हम लोग टॉकिंग करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश। ओके, कैरी ऑन। Hello friends, good afternoon. Myself Imran, you can call me also Imran. I am from my village, which name is Bhatlaiya, and this is nearby Ghorasan, means a small town, Ghorasan, and this is located in East Champaran district and Bihar. I am 20 years old and I am preparing for the SSC examination from here. Means at the British Medical, this is the institute. Here I prepare for the SSC examination with my friends. And I am preparing for the SSC examination since 2022 and 2020 and till and next my I and my all the friends will prepare till the last means chsl examination which is conducted by SSC. So we are here to talk about the confidence of English language about in SSC examination. So we are going to talk with my sir. व्यूअर्स, मैं बता दूं आपको कि एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इंग्लिश को लेकर के थोड़ा सा डर ज़्यादा हो जाता है, तो इंग्लिश से रिलेटेड हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर इब्राहिम, आई एम गोइंग टू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन जनरल लाइफ? नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस of English language in SSC examination. You can use your expression in front of your viewers, so don't be hesitate here. Yes, are you do you feel now comfortable? Okay. So what is the importance of English language in general life? You can see in the camera because your viewers will see you, so eye contact is very necessary there. Okay, see there and say something about the importance of English language. First of all, English is an international language, and I inform you that we should learn English language in our general life and for the purpose of examination. Because I personally feel that English is not a hard language before learning, but if we learn English language, then our life will be easy, and we will comfort in our any friend with our any friend to converse and go anywhere out of India and in our India, means out of the where I live in Bihar. Also in Bihar we use Hindi and Bhojpuri language usually. But here is not a culture of English language, because English language is an international language, and it is spoken all over the world, and it is worldwide language, and it has very big capacity to capture means big people, big celebrities and actor leaders, and lots of big people use it English language, and they converse. दोस्तों, यह थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, जिसके कारण यह वीडियो को पॉज करना पड़ा है। चलिए ले चलते हैं या जारी रखते हैं।
तो हम लोग बातचीत कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश को लेकर के, और पता नहीं आप वो लाइन याद भी रखे हैं कि नहीं, आप कहाँ थे। तो याद रखने वाली कोई बात नहीं है, आप जहाँ से भी कनेक्ट करना चाहते हैं उसे कनेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स समझ सकते हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं समझ सकते हैं। ओके, कैरी ऑन एंड से समथिंग अबाउट दैट इंफॉर्मेशन। Hello friends. Speak loudly because we are not using any such type of mic. So without mic we are speaking here. So speak loudly. Hello friends, I continue my conversation. Before some time I have tell you the scope of English language, means the area of English language, where English language is important and what is the importance of English language. We generally talk about the English language, means its speaking power, where it is spoken and where I can speak and where it is necessary. We go any out of our means domicile state, like I go to out of Bihar, then I need to English language to talk with multiple language people, and we go to the means other country, then we need to speak in English language to converse with them, so they can understand our feelings, and we will helpful. And second, this point was means general usage of English language and importance of English language. Second, we talk about the English language, about the SSC examination and the purpose of SSC examination. We live in the village area, and there is no means any environment of English language, and there is no any existence of English language and SSC. Means where in our society no one dare to prepare for the SSC examination, and someone says that SSC is hard, means SSC English hard, and other competitive examination they go and they prepare for the other examination, but in the SSC they only afraid of English language, because they know which subject is asked by the board, except SSC board, and they go in the SSC in other examination board, and they avoid SSC. But I will say here, not SSC is a hard language. We have to make it easy to develop our means communication skill, and purpose of the exam, purpose of the SSC examination. Here lots of means rumor and bad news are spreading in our environment. We have to clear that all rumor. So I will explain about syllabus of English language, means what is asked SSC board. सो गाइज फिर से एक बार इलेक्ट्रिसिटी कट चुकी है, और इम्पोर्टेंस ऑफ जो इंग्लिश समझ रहे थे आप एसएससी के बारे में, कि कैसे बच्चे लोग डरते हैं इंग्लिश से। कन्वर्सेशन को यहीं पे रोका जाता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी नेक्स्ट वीडियो में इन सभी चीज़ों को देख पाएंगे। और फिर एक बार मैं अपने स्टूडेंट को, इमरान को बुलाऊंगा, और क्या है इम्पोर्टेंस इंग्लिश का, क्यों डरते हैं बच्चे, कितने पूछे जाते हैं। मैं सारी चीज़ें अपने बच्चे से बातचीत कर चुका हूँ, अब तैयार कर चुका हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे बातचीत करना अपने बच्चों से। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आधी अधूरी बातें इसमें रह चुकी हैं। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और हमेशा इस चैनल के साथ जुड़े रहें। यह चैनल नया है और आपके प्यार की आवश्यकता इस चैनल को है, इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।